practical thing. So I hope my screen is visible. Yes, you Yes. can take to presentation mode. Yeah, I'm taking that. Okay. So today's topic is AI and ChatGPT in financial analysis. Believe me, after watching all these things, uh, many people, they are going to lose jobs. Okay, you'll feel that okay, यार ये तो सब चीज ChatGPT कर दे रहा है, हमें क्या जरूरत है? So lot of things means believe me, lot of things I do through ChatGPT. एक chapter लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, ChatGPT is very very convenient. So I agree. So this is, I think I'm a god. I have the power to end your world and the power to erase your life. This is written by ChatGPT. So a prompt was created, and one person, he wrote this. So see, this is what the ChatGPT, not having mind, only just whatever you are instructing, they are going to apply that. So just to break the ice, I hope all of you know, just a silly question. This is all of you know this, of course, who they are, the big shots. So you can use your chat box or you can unmute yourself and just break the ice so that we can become little bit more interactive and you can just answer this. So please, just a request, I request all of you to start their either in the chat box you all can write or you all can unmute yourself and just tell me who they are. It's a silly question, but of course you can answer this silly question also. Steve Jobs, okay, Sandhya ji, thank you. And one more person is there, Bill Gates. So thank you, Sandhya ji. There are more people also. Yeah, Samir ji, you are quite correct. No, Satyam Nadella तो नहीं है. स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स है. यस यस यस. मार्क जुबरबर्ग अभी आने वाला है. ओके, मैंने हिंट दे दिया. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. ओके, सो वी हैव दिस these people. Okay, so Satyam ji and Adyatik, they have already answered that, so they assume that this will be the next question. Of course, we have broken the ice. Let me just break one more ice and let me show you a 11-year kid can earn in billions by just using the AI. So this is Ryan, and Ryan is earning $150 million in past years. He has earned this much just by using AI. What he's doing is just giving the review of the toys. Believe me, AI can be. If someone says to nowadays, tell me, यार पैसे नहीं है, बड़ा तंगी चल रहा है. I think that's not the case. You just by showing reels only, people are earning in crores. तो इसीलिए रील आजकल रील इतनी फेमस हो गई. AI, through AI you are reaching to the people by giving a review of the places you have visited. So this is all through AI you are earning, and you're using the AI just for your benefit only and for earning as well. So you can visit his site washingtonpost.com में. You can get his the whole uh, life, how he's earning, and how since 5 years में आते आते he started reviewing this. So just a quick थोड़ा बहुत little bit of introduction of artificial intelligence. What is artificial intelligence? If someone can just write in the chat box whatever you think ki what is artificial intelligence, because AI was the topic. So first I am choosing AI, the first word. What is artificial intelligence? Anyone can write in the chat box, quick chat box, one liner, or unmute yourself and write what is artificial intelligence. What do you think? What is artificial intelligence? Yes. Anyone? Anything you can write. It's not necessary you have to give a correct answer. Here we are not giving correct or wrong. ऐसा कुछ भी नहीं है. You can just write in the chat box. Alternate to the human intelligence. Okay. Intelligence created by humans only. ठीक है. May I? Yeah, of course, Nirmala ji. Thanks a lot. So artificial intelligence is something, it is an artificial machine which would work like, a human. Okay.
Thanks a lot. And here, Shweta ji, Yogesh ji ने भी लिखा है ability to think, intelligence created by humans only. All these, okay, y'all are quite correct. Ki okay, so there is one artificial and there is one intelligence. Automatic. And sorry to interrupt, and I feel it nowadays it thinks more than a human, artificial intelligence. So Okay. if we something say imagination or something, so that thing produce it. Like for example, Black Rose, if we say, then it will produce it. So something like that. So Alexa, मेरा ये गाना प्रस्तुत किया जाए, and Alexa प्रस्तुत करती है ना? So you Yes. just, and you would believe, I मतलब 2 days back only, and I was just means discussing with my husband. Okay, let us see वो लापता ladies का बहुत सारा मतलब review आया. Let us watch that. I watched in his phone, but somehow in my phone I'm getting review of लापता ladies every day. So it is sometimes very dangerous कि when you are uttering a word also, that AI is there to catch everything. Can you show the screen in full screen mode? It's in full screen mode, sir. I don't know. Vrinda ji, you can help me. I think this is in full screen mode only. Okay. Can I say something? Yes, of course. Yeah, I according to me, artificial intelligence is like making machines capable of what human beings are doing. That is like critically thinking. So what we are capable of doing, we are now making machines to think in our manner. That is artificial intelligence. Okay. Well, And more faster than us and more precisely than us. Thanks a lot, Kamal ji. आपने जो भी आंसर किया बहुत perfect, and whatever the people who are writing the chat box also, thanks a lot for participating. Believe me, this is wholesome. means अब तो और मजा आएगा कि artificial intelligence, computer control robot, बहुत 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 कुछ है मतलब. Now big question बाद में आने वाला है कि क्या artificial intelligence is going to replace humans? And that we need to think about it. Okay, so here just a quick small definition. Whatever you have given, all of you have given the correct answer. Quite means you were closer to the definition of artificial intelligence. It is intelligence exhibited by machines. So of course there is a machine who is thinking like a human. So there is no thinking from the human or animal. They are thinking whatever you are asking them, they are going to answer as per the data feed into them. So here they don't have their own intelligence कि जो हम लोग जुगाड़ू बोलते हैं कि okay, within our resources we sometimes think कि okay, ये इतना इस situation में we can do that, but that intelligence of machine cannot think like that. So here it is playing very different role in different fields. So here we have to find out ki what are the contribution of your AI in different fields. So here they can produce a lot of things. So they can produce the text, the visual, audio, anything, you just name it. So आज वो लोग fake बना रहे हैं. So here we got कि रश्मिका मदन का फेक बन गया था, फेस बन गया था, एंड देन आमिर खान का फेक, ही वाज प्रमोटिंग सम पार्टी आल्सो, बीजेपी पार्टी को वो प्रमोट कर रहा है, एंड देन ही सेड कि नहीं, ही स्टार्टेड सेइंग नो नो दिस वाज नॉट मी. So this is sometimes dangerous also. Lot of things can be done through AI. Let us see how it is impacting our life. So anyone can tell me how, in which fields you can find AI and how it is impacting our life? Which field you can find out AIs where they are contributing to the lives of human? Yes, again, quick chat box, or you can unmute yourself and answer also. Not a problem at all. So quick, right? If you're like, I hope you all are liking this, because what happens, we are breaking the ice and we are making it very interactive session. So here, a quick response, the chat box. What do you think? Where AI has penetrated in the lives of the human and how they are contributing in the lives of human? Yes, in the chat box. Ma'am, I feel it is almost in every field. Chat GPT and AI is working. Like I am into marketing, but still for making posters, for writing blogs. Previously, before this, I used to think and then I used to write. So nowadays, it is more. I'm
Actually, everywhere, every week when someone say me, instead of thinking, I just write, make me a 4-liner draft, make me a this. Yes, And correct. आप सही बोल रहे हो, एकदम सच में बोल रहे हो। पहले क्या था, नाउ वी बीइंग इंडियन, वी हैव अडॉप्टेड फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है? तो हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है। ओह माय गॉड! दिस होल पैराग्राफ, इज़ इट स्टेटिंग करेक्ट इंग्लिश क्या? सही इंग्लिश है क्या? थोड़ा हाइफ़न इंग्लिश में डाल दे तो और अच्छा हो जाएगा। लीगल ड्राफ्ट व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर, इट वाज़ अ स्ट्रगल, मीन्स बिलीव मी बहुत मुश्किल होता था कि ओके इफ यू वांट टू आंसर एन असेसिंग ऑफिसर, हाउ टू राइट द लीगल ड्राफ्ट? All these are being catered by AI right now. So a lot of people have answered here कि IT sector में education field, of course, energy, utilities, income tax, reply, yes, निर्मला जी सही बोला, काफी चीज यूज किया जा रहा है आजकल. Lot of things AI is being impacting. Of course, it is impacting in our security also. Let us see how they have impacted our life. It's a small, you can say, example how AI is impacting our life. So, of course, for our security, surveillance, you can see the camera. So, believe me, please change presentation mode so that everyone can see focus slide. Where, Brinda ji, any problem? Display settings. Hide presenter view. Presenter view. Okay. I think this is clear now. अच्छा, उसमें वो भी आ रहा था क्या? Presenter view भी आ Next रहा था? slide. Yes. Okay, okay, okay. Sorry for that. Okay. sorry to interrupt. I am having one question. Yes, yes. Contradicting to your question, where AI chat GPT is not being used, which Hmm. are those fields हम्म. according to you? हाँ, ऑफ कोर्स दैट वी विल कम. तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, पहले वो कहाँ-कहाँ है, फिर हम जानेंगे कि कहाँ नहीं है एआई चैट All जीपीटी. right, all right. सो हियर थोड़ा अपने, बिकॉज़ वी नीड टू स्पेंड 2 आवर्स विथ ईच अदर, मीन्स अभी हम लोग पहले से ही एंड वाला चीज़ है वो कि कहाँ नहीं है, क्या है. पहले लेट अस सी कि वेयर दे आर. सो स्मार्टफ़ोन में तो है, स्मार्टफ़ोन इज़, आई एम टेलिंग यू, वेरी डेंजरस. कुछ भी आपको बोलना है, प्लीज़ क्लोज़ द ऐप्स ऑफ एवरी स्मार्टफ़ोन. कुछ भी आप कोई विज़िट कर रहे हो साइट, एंड देन इट कीप्स ऑन प्रॉपिंग, ओके, पॉपिंग आउट कि अच्छा आपने एक ड्रेस पसंद कर लिया, एंड एनी साइट, मजाल है वो वाला ड्रेस आपको बार-बार नहीं दिखाया जाएगा, एंड यू विल लैंड परचेजिंग दैट. any site you are visiting, it's sometimes very dangerous. Believe me, एक बार very renowned tax consultant had sent me a document, and he may had visited some, say, obscene कोई ऐप में चला गया था वो, एंड बिलीव उस डॉक्यूमेंट के नीचे इट केम. So it really sometimes spoil the reputation. So be very careful whenever someone is visiting any site or sub, तो don't use your official laptop at least that time. Of course, security and surveillance we can find social media platform हर एक जगह है, and of course through social media platform this is being proved, जो दिखता है वही बिकता है. So here people are using LinkedIn, Insta just to sell. So even professional people, if they are not, so if someone says मुझे नहीं use करना है, I don't want to use that, they are not coming out. So here without social media you cannot promote anything which can be useful also. It's not, so there's no harm in using social media platform. Of course, navigation, when I shifted to Mumbai, say 18 years back, and before that I was in Kolkata, so I used to ask कि ये घर कहाँ है, एड्रेस वो सब पूछते थे. So what happens कि they, so in Kolkata, please, I'm not offending anyone, people are very friendly. Earlier I'm talking about, वो लेके चला आता था, हाँ ठीक है ये घर है, हाँ ये मेरे पड़ोस में ही है, मैं आपको ले जाता हूँ. When I shifted to Mumbai, if I used to ask, people are here so busy. Of course, I have also become busy. कोई एड्रेस पूछे तो अच्छा बाजू में है, बाजू में. 2 घंटे चलते रहते थे, बाजू खत्म नहीं होता था. सो आई यूज्ड टू फील फ्रस्ट्रेटेड, यार क्या एड्रेस पूछना गुनाह है यहाँ पे. बट नाउ इफ समवन आस्क मी आल्सो, अरे है ना यार, गूगल मैप चालू कर, ओके यू गेट द. सो इवन इफ द हाउस इज नियर बाय, you will say Google map है, please find out. So here see how AI has penetrated कि we are not socializing also कि okay social बनना है वो सब, we don't have time. It has made us more busier, I can say. We are more busier now than earlier.
वी यूज्ड टू टेक अ ब्रेक अर्लियर, नाउ अब जब भी ब्रेक होता है एक फ़ोन है हमारे पास जिसमें व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है, लिंक्डइन खुल रहा है, इंस्टा खुल रहा है एंड वी आर बिज़ी इन दैट. फैमिली मेंबर्स आर गैदरिंग एंड अर्लियर वी यूज्ड टू आस्क द फैमिली मेंबर्स, अच्छा आप कैसे हो? आपके कितने, मतलब वी यूज्ड टू टॉक, बट नाउ इफ यू सी 4 पीपल आर सिटिंग, they all are with their phone. So you won't find any talks also between them. They're all busy in their phone. So we are 4 people. My children also, sometimes we all are in our phone, texting or like that. So this is what our life has become because of AI. Of course, we have seen EVs have come and they are going to launch the robotic car also, wherein there will be no driver. Of course, US was up, they are following. इंडिया में आई डोंट नो वेदर इट विल बी पॉपुलर और नॉट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इंडिया में, अपने थोड़ी ना कोई रोड सिग्नल जान रहे हैं, कुछ भी है, वी आर क्रॉसिंग लाइक दैट. तो इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो कि अगर से सपोजिंग बैक किया है, कुछ भी किया, मशीन समटाइम्स दे मे फेल. सो इंडिया में पॉपुलर होने में मे बी टाइम लग सकता है. स्मार्ट होम मीन्स समटाइम आई यूज टू से ओके माई चिल्ड्रन कि आप थोड़ा फैन बंद करके बाहर चले जाना. Lazy people, they don't switch on their fan light also, off karna raat mein. But now with the smart gadgets, they don't have to just stand also, sitting at their bed only, they can just switch on the electronic gadgets also. This is all I can say, the result of AI. We are just reaping the benefits of AI. Of course, it is being used for a lot of things. Like some people wrote in the chat box also, okay, it can be used for research. So if say supposing if you want to find out the say calculate the GDP, so Mohit ji ne bola hai ki I am from Kolkata. Thank you. Of course, still those who are from Kolkata, their heart still always go there even if shifted. So ऐसा है, कोई बात नहीं. So if you want to find out, say, poverty, what is the poverty of India, where it stands, or you want to calculate the actual GDP. So earlier we used to struggle a lot. Ki, okay, there are 3 methods, not telling at all. They are not, it's not possible sometimes to tally all the 3 methods of calculating the GDP. But now through AI, everything has become streamlined. You through map also and different you can say app, you can easily find out ki, okay, which area of India is below the poverty line, they are suffering more, they are actually famished. Means so here even जैसे कोई सिटी में बाढ़ आ जाती है, you can find out the locality where the people have seeked shelter, and through that you can just distribute the food, clothing to them. So this can be used very effectively for people. Means if you want to use it for a good purpose, even for, you can say, when you go to airport, you nowadays for booking the ticket also you don't require anyone, everything अभी क्या है. And you know, say suppose I want to cancel my ticket also, so हाँ बोलिए, मैं वृंदा बोल रही हूँ. ओके, सो हियर और बहुत अच्छा नाम होगा तो ओके, एंड इतना स्वीट वॉइस आएगा वृंदा जी का. सो व्हाट हैपेंस कि अच्छा चलो ठीक है, बात कर रहे हैं, बट वो है भैया रोबोटिक. हमारी वृंदा जी जो है एकदम लाइवली स्माइलिंग वाली बैठी हुई है, तो वो रोबोटिक से हम लोग बात करते हो कि आई वांट टू कैंसिल माय टिकट एंड दे डू द नीडफुल. Even if you want to invest also, you don't require any portfolio manager also. So many companies are opting robo advisors. You can easily just go and give your say budget, this is my savings per month, and I want to take this much of risk, my risk portfolio should be only 20%. They will definitely design the portfolio as per your requirement. So Kirti Sanan, okay. So here, okay, जैसे so here lot of things. So here आपको अगर से अरुण गोयल जी जो राम बने थे, अगर he wants to look young, so he can easily go into that app and change his looks. Now he will become young again. If you want to see, visualize yourself. So बीच में बहुत आ रहा था ना, जो वेडिंग का बात बोल रहे, जामनगर की वेडिंग की बात, तो बहुत सारे एप्स दे वर यूजिंग कि हाउ द फॉरेन कंट्री से अगर आएंगे हमारे बिल गेट्स सब, सो हाउ दे विल लुक इन द ट्रेडिशनल इंडियन अटायर. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड, यू कैन इजीली विजुअलाइज.
पुराने गानों को अगर आप वापस रिन्यू करना चाह रहे हैं, if it is being destroyed, that apps can be used. So I am going to give you some names of the apps also, wherein you can go and use that app and for your benefit only. So robotic, not only for investment advisor, even for teaching purpose also. So if you have you are having, say, very few people, there is a shortage of human resources in your office, and you can easily use AI for that purpose also, for doing a lot of things. But believe me, इससे जॉब डिस्ट्रप्शंस बहुत होंगे, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि यू फील दैट कि अरे एआई कर लेगा, व्हाई आई नीड ह्यूमन रिसोर्सेज. So this is just a small data which I wanted to present ki this is a digital world, and in 2023 there were nearly 7.021 plus billion users, internet users, and social media users के 3.16 billion plus थे. Mobile phone user 5.145 plus billion. But just since I am into sustainability also, let me tell you, whenever you are using, so people are saying carbon emission. Factory जो है, they are emitting carbon. Let's stop that. Car आप use कर रहे हो, let's stop that carbon emission from there also. But you know this कि internet आप use कर रहे हो, it is emitting carbon. So it is emitting carbon. The more we are going, say, technology driven into the technological world or digitalized world, the more pollution we are emitting. So that is why what happens, पूरे दिन में we need to ensure, I'm just going just out of the way, because what happens, of course we are going to share a lot of things ki okay, this is AI's benefit, all these things are benefit. But एक बार आप अपने this whole world, the economy, everything, think about the sustainability also ki are we doing justice to our environment? So the more we are using internet, so दिन रात अपने internet में लगे हैं, and we are using lot of apps, and we are polluting the whole environment. This is also one of the contributor to carbon emission. So we need to ensure कि पूरे दिन में एक बार हम लोग just थांबा. Okay, we need to halt and pledge कि now I will not use for this many moments, or for this hour I am not going to use the internet. I'll stop that. At least contribute something to the environment. So that was just thing. Again, see, nearly 5,000 billion tweets sent every day. 4 million hours of content uploaded from the YouTube every day. 3.6 बिलियन इंस्टाग्राम लाइक्स अपने देते हैं. यू नो, लाइक्स का इतना फैशन हो गया है, इससे दोस्ती रिश्ते टूटने लग गए. मतलब बिलीव मी, लाइक फॉर एग्जांपल माय डॉटर लास्ट वीक सेड, मैं अपनी वो फ्रेंड से बात नहीं करने वाली, आई एम गोइंग टू ब्रेक द फ्रेंडशिप. व्हाट हैपेंड, उसने मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया था. यार, एक पोस्ट लाइक इतना ज्यादा जरूरी है कि यू आर गोइंग टू ब्रेक द फ्रेंडशिप. सो दिस लाइक्स is so important. Sometimes it leads to professional rivalry also. अच्छा, मैंने उसके पोस्ट को लाइक किया था जब उसने प्रेजेंटेशन दिया था, उसने मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया. ओके, लेट्स नॉट स्टॉप दिस लाइक्स एंड ऑल. आई विल नॉट लाइक एनी पोस्ट ऑफ दैट पीपल. सो दिस लाइक्स हैव बिकम सो पॉपुलर. फेसबुक ऑफ कोर्स फैमिली रिलेटिव्स वो सब के लिए चल रहा है, उसमें तो अभी काफी कम हो गए. बट दिस Insta, on all these, you can say ki they have penetrated our mind so much ki we cannot think about without it. We cannot think a moment also. Let us see what are the top used applications of AI. Whatever we are using right now. So Google Maps we are using a lot. Uber. So a lot of search engine we use. Spam filters, plagiarism checkers and tools. So Quick Bolt जो है, Quill Bolt, it's a very good you can say app. If say supposing, ये मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ. से सपोजिंग क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ आई वांट टू कॉपी फ्रॉम समवेयर, एंड ओके, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड, 2 घंटे बीत गए, उस पैराग्राफ के वर्ड्स एक एक सिनोनिम्स देख देख के. अर्लियर आई यूज्ड टू डू दैट, बट नाउ व्हाट हैपेंस, आई जस्ट कॉपी द पैराग्राफ, क्विल बोल्ट में डाला, पैराफ्रेज किया, हो गया.
So this is what people are doing. और भी fast करना है, you can go to other sites also which convert your paragraphs, the text into and paraphrase that. So that is the Facebook facial recognition, voice to text features हो सकते हैं. Alexa तो भैया बहुत famous है. Alexa को बोलिए आपका सब काम हो जाएगा. So that is the thing. So as per McKinsey report, huge demand of digital skills are there. So there is a huge demand. If you keep on updating your knowledge relating to technology, arrest Arun Reddy. Okay. So what happens if you keep on updating yourself with the digital world? Of course, there will be huge demand and you will be unbeatable in your area. So this is some of the impact in different industries through which you can use AI. So in finance, of course, जैसे अभी विवेक जी ने लिखा, अरुण रेड्डी को अरेस्ट कर दिए हैं, जो भी फ्रॉड डिटेक्शन करना है, आपको केजरीवाल जी को अरेस्ट हो रहा है, सब हो रहे हैं वो सब. तो what happens if you want to detect anything in the finance world through financial data only? So earlier it was very difficult कि कौन फ्रॉड कर रहा है अंदर में. बाद में पता चलता है ओके ये तो चंदा कोचर जी ने किया था, उन्होंने अपना वो सब किया था. बट नाउ if you use AI and just put all the apps there, use the apps there, you can easily detect where it is. Believe me, financial data feed karo ChatGPT mein and just tell कि do the risk analysis or do. So I will show you how we can do this, and you can easily detect कि where the company is going wrong, how it can compete with the peer groups. Legal firms, they are using, believe me, exorbitantly this AI and ChatGPT, and that is why there is a lack of means employability now. Even there's a news, मतलब news में भी आया था कि IIT बॉम्बे में struggle कर रहे students to get placed. So placement का scene बहुत खराब हो गया because जो small work which the interns used to do or the freshers used to do, now they are taking the help of AI. So drafting, legal drafting, कोई भी evidence. So ये भी I will show you कि if you want to summarize a legal draft also, that can be done also through AI. So this is again, manufacturers can use it to detect any say malfunction or defective products through AI. Films and media तो बहुत ज्यादा यूज कर रही है AI को. AR रहमान का गाना को किसी और के आवाज में गवा दे रहे हैं and no need म्यूजिक डुप्लीकेशन हो जा रहा है. मेडिकल इंडस्ट्री में भी huge potential. So this is just a few areas you can see ki how AI has impacted. Gaming companies तो they are using, means कैसे अब you know कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो you can see कि gaming app कैसे they have flourished. So the benefits of Gen. So I'm just giving you a little bit of theory right now, and then we'll go to the some apps and see how we can use that. So automation, reduction, improvement, creating, summarizing, and simplifying. So these are the three, you can say 6 keywords which AI has given us, contributed in our life. They have automated our life, reduced the mandate work every day we used to do. So any efforts, so mails ka apne aap. So if I'm going out, I just write there ki okay, whenever someone sends a mail, automatically one email will be generated. I am out. I'll be available after 1 week, and they get the automated mails. Improvement of different queries, created a lot of responses, representation, summarized and simplified our life. So these are few, you can say, the benefits of generative AI. And but every good things are accompanied by false, means you can say there are mishaps. So believe me, जैसे क्या है कि एक एग्जांपल देते हैं. से मुंबई में आफ्टर 10 o'clock it's not allowed to play loud music. So even festivals maybe you are not allowed to do means अगर आप डांडिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, only कुछ एक आध दिन के लिए वो लोग बोल देते हैं कि नहीं चलो कर दो. तो मुंबई में it is not allowed. Or what happened, I just say supposing feed into Alexa कि at 1:30 play this bhajan at the loud music. So what happens, 1:30 PM के बदले 1:30 AM लिख दिया.
अब एलेक्सा जी तो है, वो तुमको कुछ पता नहीं, 1:30 AM सुबह-सुबह वो चालू हो जाती है, लाउड म्यूजिक, भजन चालू हो रहा है और रॉक म्यूजिक चालू हो रहा है। Obviously, the police will come and there are very strict rules outside India, and they definitely arrest the people if they are not following the rules and regulations. So you need to be very careful when you're using AI. Like for example, of course, I'm not again offending anyone. एक बैड पर्सन का बार बार एलेक्सा से पूछा जा रहा था कि व्हाट इज दिस, एंड एवरी टाइम एलेक्सा वाज सेइंग दिस इज द सॉसर बॉल, because she was not able to identify this is a bad person head or a ball. So here अगर से सपोजिंग एक रोबोटिक मूवी भी आई थी जिसमें रजनीकांत को वो किसने ऐश्वर्या राय का वो दिल बैठा था बेचा, एंड ही वाज वेरी you can annoyed agar that Aishwarya Rai never accepted, so he came into I will destroy the whole world. एक और भी मूवी आई थी जिसमें मोबाइल्स को सब वो रॉबोट लेके खा जा रहा था. So that is, they don't have their mind, they don't know the difference ki whether this is destructive or this is constructive. So you have to be very careful when you're directing any machine ki what you want exactly. So if you are saying you want to destroy the whole city, they will do that also. So please be very careful. But of course they can do good things also. If you feed into machine ki okay, at 1 o'clock you are going to clean this washing machine, clean the kitchen, they will do that also. So in during pandemic, so people were using robotic machine to clean their houses जिसके बड़े बड़े घर थे. It was not possible कि कौन झाड़ू पोछा रोज कर रहा है. So sometimes it is good, but you have to be very careful when you're using AI. So these are the few, this can be important for all of you. These are the few apps which you can use in your daily life while using. So everyone knows there is only Chat GPT. But apart from Chat GPT, there are other things also. Like if you want to convert your, say, text, if you need text generation tools, you apart from Chat GPT, you can use Jasper, AI Writer, and Lex. Image generation tools चाहिए. Say supposing you want to, so this is very interesting, image वाला भी मैं देके दिखाऊंगी आपको कि कैसे you are just saying कि I want a tiger with, say supposing, horns. Okay, they will create that. They don't have their mind, they will create that imaginative figure also. Stable diffusion तो अगर आपको लग रहा है कि ये यूनिकॉर्न के पांव थोड़े छोटे कर दे, डॉटेड पांव कर दे, वो भी बना के दे देगा आपको. Whatever picture, you just have to just say through voice ki I want this, or text it, or just type it ki I want this type of picture. And because of this reason only many fake pictures were coming into, so here log jo fake picture ekdam perfectionist way mein banaye the because of these tools only. Music generation tools, those who are very fond of singing also or creating music, so in the film industry people are using this to just, you can say, merge two songs of any say movies or music को merge करके एक नया म्यूजिक बनाना है. They will generate the, किसको पता भी नहीं चलेगा कि कॉपी किया हुआ है. So 3-4 मूवी से you just have to tell कि this is my lyrics, I want a proper music or background music for this. They will create this. Code generation tools, you don't have to learn the coding language here. You can simply use these tools to create codes of yours. So a lot of companies are using this. So पहले लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिमांड करते थे कि कंप्यूटर इंजीनियर्स आएंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट कोड, एंड वो कोड के लिए वैसा अब कोई जरूरत नहीं है. दे कैन यूज दिस voice synthesizes tool. So here I can create a Rajnikant voice from my mouth by using this tool. So I am speaking in a female voice, but आपको जो आवाज आएगी वो कोई और आवाज में आ जाएगी. And because of this, lot of people they are extracting money. हाँ, मुबारक हो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, एंड आप 1 करोड़ जीत गए. So you feel so happy, but you don't know only they may have used voice synthesis tool like Descript, Listren and Podcast Eye. Podcast में believe me, मैं आपको साइट पे भी जाके दिखाती हूँ कि I will say I interviewed अमिताभ बच्चन, and you know मेरी आवाज के संग अमिताभ बच्चन की आवाज आ जाएगी. So it is, मतलब it is so strange कि people are using like this.
So let me just show you some things in this just ये सब Dell E2 because इसमें subscribe करना है. I don't require that, so I have not used. I'll just give you a sample कैसे use कर रहे हैं लोग. So let me just go to my Google. So I'm going to this site. So here, say this is Stability. I hope my screen is visible to all of you. So this is Stability AI जो मैंने बोला आपको. See, if you click here, you get a lot of things. So ये dog है. You want to, so this was a painted dog, and you can see कैसे ये original look में आ गया automatically. So this is actually paid apps वो सब है. अगर आप pay करेंगे तो you will get lot of things here. See, a tiger was converted. So there was a field. You wanted to convert the picture of tiger into unicorn, or you want to change the background of any painting. You can do this through this app. So this is through this lot of people जो किसी का पेंटिंग चोरी करना है या कुछ भी चोरी करना है जस्ट बाय चेंजिंग द उसमें कोई मॉडल चेंज कर दिया या बैकग्राउंड चेंज कर दिया, यू विल नॉट कम टू नो ओनली कि किसी ने किसी का चोरी भी किया है. So so dangerous. Okay, so this is how this was एक ये मैंने बोला वॉइस सिंथेसाइजर भी like I mentioned कि वॉइस सिंथेसाइजर का डिस्क्रिप्ट पॉडकास्ट आई. चलो आपको मैं पॉडकास्ट आई वाला भी दिखा देती हूँ कि हाउ पॉडकास्ट AI यू कैन सी दिस कि लोग जेफ बेजोस को दिखा रहे हैं कि आई एम इंटरव्यूइंग जेफ बेजोस. So here, see this Joe Rogan interview Steve Jobs. कोई भी बंदा होगा ये जो रोगन जो भी है, ठीक है. सी so here this is just an example. You can add your name with any renowned personality and show that ki I have created the podcast. So this is how the people are using your AI in different areas. Of course, our topic is today related to financial analysis. So अपने financial analysis पे ही focus करेंगे. अगर कभी और थोड़ा time रहा तो we can focus in other things also. So let us go to the just a minute. I just want to show. So we were into this slide. So I'm going to just show you little bit more from the AI interfaces, the popular AI interfaces which are being used. So the apps which I have shown you, these are not that popular. Only need basis people are using. But if you will see that these are popular AI interfaces which people are using more, like DALL-E, they are using it to convert the word to visual elements. So whatever you are speaking or you are say writing in text messages, it gets converted into visual elements. Low voice. Okay. I'm audible now. Vrinda ji, I'm audible now. It is okay. It is okay. 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 So this is ChatGPT people are using. So earlier people used to say Bard. Bard को अब Gemini word दे दिया गया. तो Gemini people are using and Copilot are using. So what happens whenever I'm doing any research, what I do, I put that whatever I want to find out, I just put in all the three apps, ChatGPT, Gemini, Copilot. इसमें सबसे अच्छा best answer होता है. I just go for minus मॅडम. So here, आता नाही चालत, संध्याकाळी 6 नंतर नाही चालत मॅडम. संध्याकाळी 6 okay. So here, what happens? People get confused when ChatGPT and Bard. Bard को Gemini बोलते हैं अभी. So how they differ? As such, अगर आपको financial analysis करना है, बहुत deeply analysis करना है, I will say ChatGPT is the best. And of course, the paid version is the best. But Gemini is very good for text. Lot of things you can get. The basic difference you can say is that ChatGPT is open AI site. Anyone can go and go for it.
paid version is ChatGPT 4, but जो lower version है you can go. But Bard can be accessed only through your Google account. So you have to go through Google account only when you are going. Of course, both are free. You can use that. And Bard, ChatGPT में there is no limitation only कि आप कितना prompt डाल रहे हो. So whatever queries you are asking, there is no limitation. You can do that. So available to all. ये सब simple questions है, कोई problem नहीं है. I will show you the exact क्या है. Little bit of ChatGPT. So क्या क्या use किया है ChatGPT ने for writing email responses, for dubbing of movies, mimicking people, चैटबॉट्स, कस्टमर सर्विस, जैसे किसी ने बोला भी था कि मार्केटिंग के लिए बहुत यूज कर रहे हैं, डेटिंग प्रोफाइल्स के लिए. सो अगर मुझे से सपोजिंग आई वांट टू प्रेज वृंदा जी, ठीक है, एंड वृंदा जी की आईज को मुझे प्रेज करना है. लेट अस प्रेज वृंदा जी को, इन्होंने इतना मेहनत किया है. लेट अस प्रेज वृंदा जी. प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड वृंदा जी, मैं आपका, कैन आई यूज योर एग्जांपल इफ यू अलाउ मी? ठीक है, करूं मैं आपका यूज? ओके, तो ठीक है, चलो अपने चैट जीपीटी में अभी सिंपल विदाउट फाइनेंशियल एनालिसिस वी आर गोइंग. सो आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस साइट जस्ट टू से जस्ट टू नॉट वेस्ट टाइम. यू कैन इजीली गो, आप जा सकते हो आराम से. अगर आप जाओगे यहाँ पे गूगल में सर्च भी करोगे ना, चैट जीपीटी लॉगिन, मेरा लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी. सो यू कैन जस्ट गो लॉगिन. अगर आपको लॉगिन नहीं करना, यू कैन गो टू ओपन एआई एंड जस्ट पुट दैट प्रॉम्प्ट. Now what is prompt? Let us know this first, क्योंकि ये prompt अगर आपका गलत हो जाएगा, you will not be able to get the answer correctly. So your prompt जो यहाँ पे आप मैसेज चैट जीपीटी को डाल रहे हैं, वो आपका करेक्ट होना चाहिए. So believe me, if you are writing TCS in small letter, he may get confused. You have to write the correct prompt. It should be exactly what you want. So I am just writing here, write one love letter. ठीक है, ठीक है, just please, this is, I'm just making it थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं. So write one love letter for वृंदा जी. ठीक है, वृंदा जी नहीं लिख सकते यहाँ पे, सॉरी. ओके, सो वो वृंदा, ओके, प्रेजिंग हर ब्राउन आईज. आपको कौन सा आईज है मुझे दिख रहा नहीं है, आप बता सकते हो अपना कलर आईज का. ठीक है, Brown. It's brown. ओके, ब्राउन आईज. ओके, ब्यूटीफुल आईज, ब्राउन आईज, ब्यूटीफुल स्माइल. ठीक है, ओके, एंड प्लेजेंट नेचर. ठीक है, I have just given this prompt. So I want only these three to be praised. ठीक है, और वही तीन ही चीज प्रेस करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा. बट इफ यू थिंक कि नो, आपके जान पहचान में वो भी है, तो आप और भी इसमें कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट चैट जीपीटी इज गिविंग. एंड टू द लाइट इन माय लाइफ, डियर वृंदा, एवरी टाइम आई थिंक ऑफ यू आई कांट हेल्प बट स्माइल, देयर इज अ वार्मथ. मतलब इतना जो है ना, आप देख लो वृंदा जी, मैं आपको ये वापस कॉपी करके पेस्ट करके आपको भेज दूंगी. देखिए आपका स्माइल अपने आप ही आ गया. अब हंसी तो फंसी, अब क्या कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज हाउ पीपल आर यूजिंग. एंड एक लड़की को सेम लेटर 5 लड़कों ने दे दिया था, बिकॉज दे यूज चैट जीपीटी. तो अगर आप प्रॉम्प्ट में ये 3 ही वर्ड लिख रहे हो, तो एवरीवन अगर ये 3 ही वर्ड लिख दिया, तो यू नीड टू यूज योर ह्यूमन ब्रेन हियर. स्मार्ट अप्रोच कि जो दूसरे लोग लिख रहे हैं, दे में ड्रेसिंग स्टाइल को प्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा चीज कर सकते हो, एटलीस्ट सेम पर्सन को एक जैसा तो लेटर नहीं जाना चाहिए. ओके, तो रिसेंटली आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब. सो व्हाट हैपेंस कि आई ड्राफ्टेड माई रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम चैट जीपीटी ओनली. एंड वो इतना अच्छा ड्राफ्ट किया कि मैनेजमेंट को आंखों में आंसू आ गया कि ओ माय गॉड, मतलब दे फेल्ट, oh my god, you are losing. We know that you have worked. So I convinced them that I worked so much in your organization just by using this, because you know what happens, like for example, I'm just giving you some example. When you are writing a mail, you may struggle for the words. Okay, the way your eyes crinkle at the corners and the genuine joy that radiates from your lips is absolutely enchanting. I find myself drawn to you
captivated by your charm and warmth you bring into. So you know what happens ki this how people are using. So आप खुश मत होना कि अगर कोई आपको इतना अच्छा रोजी रोजी लेटर दे रहा है तो आप खुश हो गए यार क्या बंदा नॉलेजेबल बंदा है, क्या वो हाई फंडू वाला बंदा इतना अच्छा लिख रहा है वो सब। यू डोंट नो दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चैट जीपीटी। सामने वाला वो क्या है, आके वो खैनी लेके बोलेगा ढूकी वैसा वाला बंदा आ जाए तो यू कांट बिलीव दैट आल्सो। सो प्लीज बिवेयर। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, इट इज जस्ट आई एम मेकिंग द एनवायरनमेंट थोड़ा लाइवली अपने बीच में। ओके बिकॉज क्या होता है कि सभी तो क्या कर रहे हैं कि अपने इंटेलेक्चुअल वर्ड बोलेंगे, सब करेंगे। लेट अस मेक इट लाइवली एंड थोड़ा हैप्पीली मोड करेंगे। ओके सो हियर व्हाट हैपेंस, like I said कि you can use chat GPT in lot of things. Okay. So here let us find out how we can use chat GPT for financial analysis. So this is the need of the hour. Chat GPT is the need of the hour, but of course you can use Bard also for a lot of reasons. So this is all theory of chat GPT, and believe me ये मैंने chat GPT से ही निकाला इसका definition. So your definition आपको दिख रहा है, it's a language model developed by OpenAI. So when there is a smart thing, why I should use my brain? People are becoming more lazy nowadays. So this is all given by ChatGPT only. This answer ChatGPT नहीं दिया. Okay, so ChatGPT can be used in different manner. राइटिंग जैसे मैंने अभी बोला रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं आप। कोई आइडिया जनरेशन हुआ है, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट आइडिया कि वेदर इट इज अ गुड फॉर थिंग। यू वांट टू ट्रैवल, सो यू वांट टू जज पोर्ट ब्लेयर की मालदीव्स, इफ यू वांट टू कंपेयर इट विल गिव यू द फुल थिंग कि विच should be your place. You give your budget and say I want to plan my wedding, they will give the whole list कि क्या क्या आप कर सकते हो। any testing, auditing, costing, tax preparation, everything they can do. So believe me, if I want to know the steps of auditing of a small MSME, they will give you valuation का आपको पूरा चाहिए just कि okay I want to go for IPO listing, what are the steps which I need to follow, where which areas are prone for risk, everything they can give you. So this is the thing. ChatGPT 2, ChatGPT 3 they are free, ChatGPT 4 is chargeable. For advanced research or advanced queries, you need to subscribe to ChatGPT 4. So this is just a thing. So in the financial analysis, we are going to do some financial analysis and how it can be used. Data interpretation, ChatGPT का यूज तो करेंगे ही अपने, बाद में हम दिखाएंगे कि हमारे पास जो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, सब में ChatGPT है. So everything it's there. So these are the things, few things which we are going to cover today through the ChatGPT, how it is going to do this. So let me share again few Excel sheets which I have. So दो वृंदा जी दो slides खोल सकते हैं क्या? Excel and the Google. Can I open? Yes, I open it for you. Of course, you can open Sure. for me. So I need this Excel sheets. एक मिनट, हाँ, Excel sheet दिख रहा है क्या यहाँ पे? Okay, ये वाला Excel sheet मुझे No, चाहिए. we can see on the PPT. I know that that is why I'm asking वृंदा जी कि मुझे वो help करेंगे Excel sheet और दो Excel sheet है मेरे पास. I'm just selecting. I think shift से I will control से मैं select कर रही हूँ. Let us see we can do this. Of course we'll do this. ठीक है? तीन मैंने screen use किया है अभी. I hope मेरा Excel sheet is visible. This Excel sheet is visible. Everyone, Yes. you have to tell me Yes, हाँ yes, अगर ये visible है. एक ये भी visible है आप लोग को. Is it On the visible? Excel sheet we can see. Okay. Two Excel sheets I had open and this is my Google. ये जो ChatGPT अपना चल रहा था. All of you can see this, na? Yes, Yeah, yes. so when you are So I- switching, we can see that. Yes, perfect. So let us first do few financial analysis जो अपने students को as a student we learned comparative statement, ratio calculate किया, and because of this many people hire students as an intern कि भाई ratio calculate कर देगा, comparative statement calculate कर देगा, जो अपना decision है अपने ले लेंगे. But because of this reason now they are not hired. Now I Can we use PDF also for this financial analysis with ChatGPT?
We require Excel sheets only. No, everything can be used. Rather PDF में ही आपको चैट जीपीटी मिल जाएगा. आप बस बने रहो हमारे साथ और आप Okay, धीरे okay. धीरे देखते रहो कि क्या कर Okay. रहे हैं हम लोग, क्या करिश्मा करने वाले हैं. So here मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब चैट जीपीटी का ही कमाल है. I'm just becoming a mediator. So here, say supposing I have copied one balance sheet of a financial, just a small example I'm giving right now. Yes, it's एक in the balance free sheet- version, na madam? This is free version. चैट Okay, जीपीटी वाला जो मैं okay. फ्री ओपन एआई में जाएंगे या Yes, फिर आप yes. लॉग इन कर लो गूगल अकाउंट से तो No, आपको I know that I know, but मैं पूछ रहा था कि फ्री में है ना ये पेड वर्जन में डेटा नहीं, मैं पेड वर्जन नहीं यूज कर रही हूँ. पेड Okay, वर्जन थोड़ा okay. सोफिस्टिकेटेड होगा. मैं एम यूजिंग फ्री वर्जन ओनली. Okay, तो okay, आई okay. डोंट रिक्वायर दैट मच. जस्ट थोड़े बहुत काम यूज करती हूँ मैं, तो इसलिए आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, आई हैव नॉट टेकन फॉर दैट पेड वर्जन ओनली. Yes, yes. So No, here, no. okay. Yes. तो ये Yes. सपोजिंग दीज आर से 5 years का डेटा है मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. Okay, and this is a balance sheet given here, and this is a profit and loss statement given here. ठीक है. Now, anything if you want to say, supposing I just go here and say I just copy this in the chat GPT. ठीक है. अभी चैट जीपीटी सिंस मेरा पेड वर्जन नहीं है तो ये बड़ा हैफेजर्ड वे में उसमें कॉपी होगा, बट आई कैन ऑलवेज go for the prompt कि मुझे exactly क्या चाहिए. So you are going to help me whatever you want. I will put the prompt accordingly. ठीक है. So right now I'm just pasting this data here. This whole balance sheet I have pasted. You can also paste, कोई problem नहीं है. Okay, and now I'm going to put the prompt. So first I'm saying calculate the important ratios here. ठीक है. And comment on it. This is a simple prompt I have given right now. I may not have any idea कि कितना ratios calculate करना पड़ सकता है. Then later on we will go further. So right now ये हमें chat GPT जो है, so यहाँ पे Grammarly भी दिखा रहा है. अगर मेरा कोई grammar wrong है तो वो मुझे बताएगा कि आप क्या करना है. So here first they are writing the ratios which you need to calculate. Under the ratios, what जैसे like liquidity ratio में क्या क्या ratios होते हैं which you need to calculate. अब ये हर ईयर वाइज आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करके दे रही है. सिमिलरली द क्विक रेशियो विच यू नीड टू कैलकुलेट, ये उसके बारे में लिखेगा. सो एज अ स्टूडेंट, लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट कि सबको आना चाहिए. ओके, इट मे नॉट बी नेसेसरी कि पीपल एट दैट स्पर ऑफ मोमेंट नोज दिस, बट ये आपको सब कुछ करके देगा तुरंत का तुरंत. यू आर आंसरिंग थ्रू योर स्मार्टफोन एवरीथिंग व्हाट यू रिक्वायर. So in this manner, they are first calculating the different ratios. Solvency ratios, debt So to equity. fascinating is that he has taken a data like 19 to 23 when you have copied it, though it was looking in a very haphazard manner, but Yes. it has taken in a Excel sheet type of. Perfect. लेकिन अगर आप चैट जीपीटी 4 पेड वर्जन लेंगे तो वो आपको पूरा एक्सेल शीट में कॉपी करके देगा. So they will, Okay. तो वो और सिस्टमैटिक वे में, बट इट डजंट मैटर कैसा कॉपी कर रहा है, दे आर डूइंग दिस. सो हियर सी दिस, जो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं एज अ फाइनेंस एनालिस्ट, वी यूज्ड टू राइट रिपोर्ट एंड वी यूज्ड टू स्ट्रगल, यार क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है. दैट वाज द ह्यूमन माइंड. बट हियर अकॉर्डिंग टू देयर you can say artificial intelligence, they have given 3 pointers. The liquidity ratio indicates strong financial health. Debt to equity ratio, absence of profitability, data limits. Okay, because I had not copied the profit and loss statement, that is why there is a limitation here. But now what happens कि आपने बोला कि financial health जो है, okay, it's strong financial health, okay. But if you want to find out कि which are the strong areas which indicates कि it's a strong financial health, you can put more prompt to it and इसको आप और increase कर सकते हो. तो here I am still writing indicate. So here point out the indicators for the strong financial health. Say supposing I want to increase my report further. So whatever you are prompting, it should be exactly what you want. So here they are going to give us the indicators
which indicate what are the strong financial indicators. So here above one indicates. So here you can add all this to your report and convince your clients. But human mind को कोई beat नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है जब आप बोलोगे तो आप वहां पे एग्जैक्ट पोजीशन देके बोलोगे एज एन ऑडिटर, एज अ वैल्यूअर कि ओके दिस इज द लैग वेयर यू कैन इम्प्रोवाइज. They don't know this much. Okay. Abhi say supposing I just want to go for the valuation also. Ki, okay, you just tell me one question. I will type in the prompt and the answer which you want on the basis of this balance sheet. Anyone can just ask me. I will just give a prompt on their queries, on the basis of their queries. Red flags for fraud detection. Yes, red flags. For fraud detection. Okay. Fraud detection. Everything you can get. Okay. इसी balance sheet को देख के बता दूं मैं, on the basis of the above balance sheet, है ना? Yes, Indicate. Okay. अदरवाइज ये थ्योरी दे देगा आपको कि क्या क्या फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रेड फ्लैग्स देखना होता है. ठीक है, अपने इसी बैलेंस शीट को लेके करते हैं. ठीक है. So see this report. You can see this current assets. मैं आपको वापस I will scroll again up. Okay, I will scroll up and I'll read this report for you all. So भूपेंद्र जी देखिएगा आप कितना मतलब it will be helpful for you. Of course, you're going to use your human brains, but see, rapid fluctuation in asset value. There's a sudden and unexplained increase in non-current asset or capital work in progress, which may represent misrepresentation or overstatement, discrepancies in liabilities, frequent changes in the financial assets. So there's a lot of fluctuation in the investment or loan receivables, which is again indicating red flags. Unexplained changes in the other assets or liabilities. So spikes in other assets है, sudden spike हो रहा है. So you can, so that is I'm telling you, if you really want to invest in a company, simply extract that balance sheet and put it in ChatGPT. They are going to tell you whether it is suitable for investment, but they will not advise you कि आप invest करो. मैं आपको एक दूसरा example देते हैं. Ma'am, one more thing. One more thing, ma'am. Like you have plotted figures in Excel. Can we give PDF for different years and then raise queries? Yes, yes. अभी मैं आपको चलिए मैं PDF भी extract करती हूँ. ठीक है. I want to compare. Yes, sir. बोलिए. Can you give a prompt like arrange data in table? सब दे सकते हैं, बट वो जो टेबुलर फॉर्म अगर आपको चाहिएगा सर, तो यू नीड टू गो फॉर द पेड वर्जन. ठीक है सर, थोड़ा सिस्टमैटिक अगर आपको चाहिए. शायद में भी इसमें भी वर्क करेगा. चलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द, अब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना सर? नहीं, मैं मींस जो आपने डाटा कॉपी किया था एज इट इज, तो वो डाटा आपका मतलब एक तरीके से वन लाइन में मतलब वैसे आ रहा था. कैन यू गिव ए प्रॉम्प्ट लाइक अरेंज डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म लाइक दे सकती हूँ सर. आपका वो क्वेरी अपने करते पहले, उसके पहले सर एक अपने जो है एक, जैसे अभी भूपेंद्र जी का आंसर कर देते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने पूछा कि पीडीएफ अपने अपलोड कर सकते हैं क्या इसमें. ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि भूपेंद्र जी आप 2 कंपनी चूज करिए, मैं पीडीएफ भी अपलोड नहीं करूंगी इसमें. चूज 2 कंपनीज, 2 राइवल कंपनीज which you want to compare and you want to invest in that company but you're confused कि किसमें इन्वेस्ट करें. Are you there भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ हो? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, आप कोई 2 कंपनी चूज कर लीजिए. HDFC ICICI बैंक चूज कर ले. Kotak and yes ma'am. Okay, perfect. So ठीक है, अपने अभी करेंगे. We are going to do few analysis. ठीक है, and now the prompt अपने जो देना है. So भूपेंद्र जी आपको क्या टाइप का एग्जैक्टली एनालिसिस चाहिए? मार्केट रिसर्च चाहिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस चाहिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस चाहिए कि रिस्क एनालिसिस चाहिए? नेम वन वर्ड, आई विल राइट, और यू वांट एवरीथिंग? Anything ma'am. ओके, चलो ठीक है, अपने करते हैं. कंपेयर कोटक बैंक
So I am not uploading even the PDF also. ठीक है, जैसे आपने पूछा कि PDF because you wanted some listed companies to be compared, correct? हम PDF नहीं भी करेंगे तब भी वो अपने आप करके देगा. कोटक बैंक and Yes Bank, ठीक है, on the basis of, so analyze करते हैं अपने on the basis of risk analysis, ठीक है, investment analysis, they are going to give you all the parameters also, ठीक है, and sensitivity analysis, ठीक है. Anything else which you feel कि और इसमें ऐड करना है तो आप बोल सकते हो मुझे. No, ma'am, it's fine. फाइन, इसको करते हैं अपने. लेट अस, सो कोटक को कैपिटल कर देते हैं हियर बेस्ड ऑन रिस्क है. सो यहाँ पे अगर आपका कुछ भी होगा दे आर गोइंग टू शो यू. ओके, लेट अस सी. सो हियर दे आर सेइंग कि क्या क्या आपको करना है. लेट इट डू इट. आई विल अगेन स्क्रॉल अप फॉर योर. But I suppose it will use data only up to 2021, right? तो सर वो क्या है ना कि दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड थिंग. मतलब आप जो डेटा है, हाँ, इसमें आप वेरी लार्ज डेटा, अगर इफ यू हैव वेरी लार्ज डेटा इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पुट हियर. जो मैंने जैसे बैलेंस शीट दिया, अगर उसके बहुत बड़ा वो वर्जन होगा देन यू नीड टू गो फॉर पेड वर्जन. Means limited they can go for it. So here let us scroll up and find out what they have got it. If you want in numbers also they will give you in numbers also, कोई problem नहीं है. जो भी आपको चाहिए they'll give. So they have compared first कोटक महिंद्रा बैंक overview दिया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, both are private sector bank. Risk analysis में what you have to do. So when you are doing the risk analysis, Kotak Mahindra Bank का credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, they have given ki what are the things. So if you want in an elaborate manner, you can get in an elaborate manner also ki what exactly you need to find out for risk analysis. Yes Bank जो है कैसे how they differ from each other, कि significant credit risk था faced, but conservative lending approach है for Kotak Bank. So this is how you can do. Investment analysis में you can see that कि they have compared how Kotak has a stable growth trajectory, but Yes Bank of course बीच में डूबा भी था. तो here crisis ridden past है उसका. So obviously, if you think you want to take more risk, your portfolio, you are ready to take risk, you can go for Yes Bank, or otherwise, if you want a stable income, you can go for Kotak Mahindra Bank. So in this manner, you are getting the investment advice also. But if you will write a prompt, like if I write, say, okay, suggest which should be chosen, Kotak or Yes Bank for investment purpose, they will not give you. Let me type for you. Okay, suggest which bank should be chosen. So अपना थोड़ा limited advice देगा वो. Should be chosen for investment purpose. So this is the key strength they are giving: stability and reliability, low risk profile, stronger corporate governance, dividend yield. So this is, they have given all the key strength and the investment consideration which you need to choose. So everything you are getting. So you don't require now any advisor also, investment advisor. ChatGPT hai na. Now, this, if you see Kotak Bank, is it giving the latest issue that RBI imposed restrictions on it? Is it giving it? हाँ, देखिए मैं आपको स्क्रॉल अप करके दे देती हूँ. आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन, अगेन व्हाट हैपेंस कि लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन is coming in different banks in different manner, correct? So what happens ki everything, whatever you need to write the prompt perfect manner में. I just wanted a general overview कि कौन सा बैंक को चूज करना होगा, ठीक है?
एक स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन अगर मैं लिखूंगी तो वो और अच्छी तरीके से देगा. तो इफ यू वांट दैट आई कैन राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर दैट आल्सो विवेक जी. व्हाट डू यू फील कि मैं वो भी लिख के दूं और Yes, please, because what I feel it will not give. It doesn't ठीक है. have that data. सो ठीक है, अभी देखते हैं विवेक जी करते हैं कि नहीं. ओके ओके, सजेस्ट द चॉइस ऑफ द बैंक on the basis of regulatory laws imposed on them. ठीक है ना विवेक जी, ठीक लिख रही हूँ प्रॉम्प्ट विवेक जी? Yes, yes. ठीक है, ओके. Ma'am, I'm trying to paste PDF. How PDF is uploaded in this prompt? मैं आपको ना पीडीएफ में जाके ही एआई का हेल्प करवा देती हूँ. Okay, okay, ठीक okay. ठीक, एक भूपेंद्र जी रुकिए थोड़ा. Okay. मैं आप we don't require only to open our Google. We can do that there only. Okay, okay. Yes, I see. I can see one tab is there on PDF. हाँ, तो पीडीएफ का टैप करके करिए, आपका हो जाएगा. विवेक जी Madam, अभी देखिए आप. You read just this Kotak Bank because this is actually this is the highest risk. This Kotak Bank share was dropped by 10% after RBI restrictions. And if you read these comments of ChatGPT, they are exactly reverse. तो व्हाट हैपेंस विवेक जी, ये वही मैं आपको बोल रही थी कि दिस इज मशीन. अगर सब मशीन का ही एडवाइस लेने लग जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा फिर? पोर्टफोलियो मैनेजर क्यों आएगा? कोई सीएफए क्यों करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों बनेगा? है ना? सो हियर द ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर सेइंग दिस. ओके, सो चैट जीपीटी में जितने भी प्रॉम्प्ट हम लोगों ने डाले हैं, जितने डेटा हम लोगों का फीड हुआ है ना, दे आर गोइंग टू conclude on that basis only. इसीलिए चैट जीपीटी लिखता भी है on the basis of the data available we are giving a conclusion. You cannot just blindly believe chat gpt or any other app. But no madam, I am trying to attract your attention to some other point. You just read here. Generative conservative investors, Kotak Mahindra Bank is the preferred choice due to its consistent compliance, strong governance, and low regulatory risk. It is exactly reverse today. So why it is showing that? Because it doesn't have latest data. Correct. It is using data only up to 2021. So what I'm saying is that especially for investment advices, where the latest data is very important, these we should not use chat GPT. ठीक है, परफेक्ट. देखिए मैं आपको ना दूसरा एक साइट में लेके जाते हैं, अपने बार्ड में. ठीक है, बार्ड में इसका प्रॉम्प्ट Yes, Bard will give you correct. That's what मैं आपको वही लेके जा रही हूँ. So that is why मैं आपको यही बता रही थी कि यू शुड ओपन बार्ड, चैट जीपीटी, क्योंकि लोग जो कन्विंस होते हैं चैट जीपीटी से, बहुत ज्यादा चैट जीपीटी से, वो हाँ खुद लिख रहे हैं 21 के बेसिस. बट सर वो जो आप बोल रहे हो कोटक महिंद्रा, हियर वी आर कंपेयरिंग कोटक महिंद्रा विथ येस बैंक. वी हैव नॉट कंपेयर्ड कोटक और वी हैव नॉट कंसिडर्ड कोटक बैंक एज अ सोल, मतलब बैंक को कंपेयर किया था हम लोगों ने कोटक बैंक और यस बैंक को कंपेयर किया था. तो दे हैव गिवन देयर जजमेंट ऑन दैट बेसिस ओनली. ठीक है, सो अभी आई विल शो यू बार्ड का ऑल्सो एंड देन यू कैन जज योरसेल्फ कि कौन सा बेटर है. सो हियर व्हेन यू आर, सो बार्ड का नाम अभी जेमिनी हो गया. Again, you can go through Google, search Gemini. You will get this prompt for Gemini. Let us compare this. Okay, आप विवेक जी, आपको सिर्फ कोटक सिर्फ कंपेयर करना है कि कोटक एंड यस बैंक को अगेन कंपेयर करना है? You just want a correct judgment for Kotak only, correct? No, you can give the same prompt here. What Okay, you so analyze Kotak Bank. ठीक है ना? Please correct me if I am going, say, Haywards. So analyze Kotak Bank and Yes Bank on the basis of regulatory
laws, Compliances. okay, Okay. regulatory compliances. So you can see this कि कैसे machine differ करता है, yes bank and okay यहाँ पे bank, ठीक है, as laid by RBI कर सकते हैं. So lot of places I use BARD and lot of Yes, sir. places. See this. Here they it's are giving giving- different. So आपको मैंने यही see तो that is why I was waiting कि कोई बोले तो मैं चैट जीपीटी से हट के फिर बार्ड में जाए. तो here if you want exactly financial analysis, आपको ratios वो सब कुछ भी calculate करना है, I will show you. मैं same balance sheet यहाँ बार्ड में copy करती हूँ and आपको पता चलेगा कि क्या difference है बार्ड और चैट जीपीटी में. Let me copy that balance sheet again, है ना? And let me just copy this balance sheet. कहाँ गया balance sheet वो? Okay. So this balance sheet again I'm copying in BARD and see the response of BARD. So you will come to know कि कब किसको use करना चाहिए, because main objective अपना ये नहीं है कि okay we are going to rely only on one. So here let us use this. I have copied, so they take the screenshot. They don't show the haphazard way. So यहाँ पे भूपेंद्र जी आपका problem solve होगा कि अगर PDF भी चिपकाना है तो ये चिपकेगा. Now I have to enter a prompt. So here I am entering the prompt कि calculate the important ratios. Sorry to interrupt. How did you put up this Excel sheet? I just missed out. अच्छा मैं वापस जाती हूँ. I just went to this Excel sheet. I am just copying it. Okay, this is already ये है, मैं इसको Control C मार के Copied. copy कर रही हूँ. Okay. Mm-hmm. I am going to this site, BARD वाले में. Okay. Let me copy this. Okay, so here BARD. Okay, it is taking only small Yes, they picture are kind of. taking the Okay. screenshot of that. Yeah, view. yeah. Got it. They got it. will Thank not you. show the haphazard way as in chat. Thank you. Yeah, yeah, understood. So here I am just calculate the important ratios and comment on it. ठीक है? Same prompt I am giving here also, and you will come to know कि which one to be used at what moment. Okay. See this? यहाँ पे पहला ही रेशियो में लिख रहा है this ratio measures a company's ability higher. Okay, based on the balance sheet current ratio they have calculated for 22/3 only, not individual basis. If we go to chat GPT we will see that कि chat GPT ने individual wise, so you get more detailed form of financial analysis in chat GPT. So As can't we write to the Gemini that calculate the ratio for all 5 years? चलिए लिख के देखते हैं अपने, ठीक है? Okay. Calculate the ratios. They will not calculate उतना ratios also. देखिए आप वो current ratio में ही रह गया और debt Mhm. equity ratio में. Yeah, yeah. उसको they are not finding the exact data, हो ना? And chat GPT में देखिए आपको again this forum I am not using to praise any app. I am just showing the differences, the lags. Yes, in yes, the- we are हाँ, getting it. है ना? Correct. Because क्या है कि recording कर रहे हो मैं जिस बता रही हूँ कि मैं कब क्या क्या चीज यूज करती हूँ क्योंकि एज पर माय कन्वीनियंस आई एम यूजिंग. सो आई एम Yes. जस्ट शोइंग यू चैट जीपीटी ने कितना पूरा डिटेल्ड व्यू में पूरा दिया था उसने. देखिए क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में भी डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कैलकुलेट किया था. तो हियर व्हाट हैपेंस, जेमिनी जो है ओके दे आर गिविंग एन ओवरव्यू. नाउ एक और चीज के लिए आई यूज बार्ड और जेमिनी इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर बिकॉज अगर से सपोजिंग कोई केस जजमेंट आता है, आई वांट टू रीड दैट केस जजमेंट and say supposing I want to cite that in my say any कोई questions queries आई है and I want to cite that in a summarized form. So I will go here, say supposing any recent case judgment में I am going, ठीक है? Recent case judgment में I will go. So I am showing you from the scratch only कि मेरा कुछ भी मैंने रेडीमेड कुछ नहीं किया. Okay, say supposing
कानून.com जो है, चलो इसी में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही चले जाते। So I'm just extracting. I think कानून वाला जो साइट है वो ज्यादा अच्छा है, उसमें से I can extract इंडियन कानून वाले में। So here browse judgment. So I want some judgment. I'll copy that judgment. ठीक है, 21 का एक केस जजमेंट लेंगे अपने। Okay, say this is the first judgment I got, and I want to just read that judgment in a summarized form. क्योंकि कब चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, sometimes it becomes difficult for us to read the full judgment. So I'm just trying to put it in a concise manner, this judgment, the summarized form. ठीक है, I'm just copying this judgment. The full judgment I'll copy. Okay. So I'll copy this in Gemini. Okay, this is better. Okay. So I'm just giving a prompt here. Summarize. अच्छा, इसने अपने आप ही click हो गया. Summarize this judgment. Yeah, explain this judgment in a concise manner. Already given. ठीक है, हाँ एक्चुअली पहले मैंने बहुत बार किया हुआ तो इसको समझ में आ जाता है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछने वाली है। तो व्हेन यू पुट द सिमिलर डेटा, तो ये भी एक एआई का है कि मतलब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ और ही देगा वो, जो मेरा रेगुलर फीचर है। सो आई विजिट दिस साइट रेगुलरली एंड पुट द जजमेंट एंड आस्क दिस सेम क्वेश्चन की पुट इट इन अ कंसाइज मैनर। सो हियर दे हैव पुट इट इन अ कंसाइज मैनर कि फैक्ट्स क्या था, लोअर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, एंड द लीगल एनालिसिस आल्सो इन अ वेरी कंसाइज मैनर दे हैव गिवन, की टेकअवेज they have given. So this is the way you can do this very nicely also, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो this was all about Gemini and ChatGPT, which how you can use it. Any question here you can want to ask? क्योंकि अभी अपने जाएंगे एक्सेल में जाएंगे, वर्ड में जाएंगे, पीडीएफ में जाएंगे, and we will see that कि they have their own ChatGPT embedded in that अपना Microsoft में. You don't need to visit this site. So any question till now, please. Madam, can you put one question in chat GPT? Who is the chief minister of Maharashtra? ठीक है, okay. I thought कि हम लोग ये फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए था। चलिए, who is the chief minister of Maharashtra? So there is a person who's testing ChatGPT also. Correct answer, yes. Giving correctly because it is Correct answer, yes. it is updated till October तो 23. ये उसने अपडेटेड, उसके पास ये डेटा फीड था इसलिए उसने किया, लेकिन जो आरबीआई का जजमेंट था, जो आरबीआई ने दिया था रूल, अभी लॉ आया था, रूल्स डाला था कोटक में, वो उस पे नहीं फीड किया था, इसलिए उसने आंसर नहीं किया। बट जेमिनी के पास सब है। Maybe one prompt is missing currently. What is the which is better in light of current development? Elections, please sir. No, ma'am. Like that sir was talking about the अच्छा, कोटक वाला ना, Yes. ठीक है। If you want, we can go for again here. We will visit again, sir. अब अपना टाइम थोड़ा भाग रहे हैं। Yes, yes, please. So I just want कि आप लोग को एक्सेल उस समय भी दिखा दे कि क्या है। Yes, ma'am. Yes. So if you allow me, I can continue this because this is all available for you all. I just showed you. No issues, ma'am. Please take it forward. Okay. And just one question. Yes. The
the presentation, the comparative statement which you have, can we present that in a PowerPoint by this? Getting you, Nirmala ji, can you please repeat what you want to ask? The comparative we have done for the two, means the balance sheet which you uploaded, and then we got the quick ratio and all the ratios analysis. The same thing we want in the PDF, means PowerPoint presentation. How can we do this? You can copy paste it here. From यहाँ से copy कर सकते हो आप उसको. There is, means only copy paste. There is no, means a direct PowerPoint can be made. You have to do formatting, na? Yes, Formatting you have to do. formatting करना होगा सब. और उसके बाद क्या है, आपका जो आंसर है ना, मैं आपको अभी देती हूँ. चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको. देखिए आप बस थोड़ा सा वेट करिए. वी आर गोइंग टू नाउ एक्सेल. ठीक है. एंड एक्सेल में व्हाट यू हैव टू डू, ये मैं आपको बता, यू कैन डू दिस. एवरीवन हैज नाउ दिस ऑप्शन कि चैट जीपीटी, ये जो एक्सेल में देयर इज वन एड-इन्स का राइट साइड में. Madam, we cannot see that. We are seeing chat GTP वाला screen. अच्छा, तो मैं वापस न्यू शेयर कर देती हूँ. एक काम करती हूँ. ठीक है. हाँ प्लीज आप ऐसे बोलते रहिए, नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या दिख रहा है. आप दिख रहे हैं? Now Excel we can see, correct. Perfect. Okay. So here what is happening? This is add-ins. ठीक है. Excel में Microsoft they are providing this add-ins. Now this add-ins you have to do. It is not there. ठीक है. तो मैंने add-ins में GPT for Excel अपलोड कर दिया है ऑलरेडी अपने सिस्टम में. ठीक है. How it helps me? Let me tell you कि how it helps me. There are a lot of add-ins. These are all AI driven tools. Solver, optimization models है, autopilot है. So आपको कोई टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कुछ करना है, वो सब एवरीथिंग इज देयर. लॉट ऑफ वर्जन्स आर देयर. मिनी कैलेंडर बन जाएगा आपका. स्प्रेडशीट AI, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, बहुत सारे वर्जन है. आई हैव जस्ट अपलोडेड द जीपीटी फॉर एक्सेल. ठीक है. अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई डोंट हैव टू विजिट से. मुझे इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट तो जरूरी है वहां पे, लेकिन आई से सपोज आई डोंट वांट टू शो एवरीवन कि मैं गूगल जाके किया मैंने. आई एम जस्ट गोइंग, आई एम यूजिंग चैट जीपीटी. यू हैव टू यूज द प्रॉम्प्ट अगेन. नाउ सी सपोजिंग दिस इज अ डेटा आई हैव एक्सट्रैक्टेड. मेरे पास एक डेटा था, सेल्स का डेटा है ये. दिस इज अ सेल्स एंड द पर्सन हु हैव परचेज से बोर्नविटा हेल्थ ड्रिंक, एक शॉप का ये मैंने एक सेल्स डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. एंड दिस वाज द से क्वांटिटी दे हैड परचेज्ड, एंड दिस वाज द प्राइस पर क्वांटिटी. I'm just giving a very small example how you can use for client also. And this is the total sales they have got it. This is the purchaser who had purchased this purchaser. ठीक है. So earlier क्या होता था, I just wanted कि total sales में सबसे highest sales कौन सा है. ठीक है. तो what we used to do, Excel में equals to sign दिया, एंड देन उसमें ग्रेटर देन, इक्वल्स टू साइन देके बहुत हेडेक, वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नाउ. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इक्वल्स टू जीपीटी. सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ जीपीटी. सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ यू कैन ऑप्शंस आर देयर. एंड ये जब जीपीटी आप डाउनलोड करोगे, देयर आर एग्जाम्पल एंड वीडियो. So you can go there and find out the details की क्या, because here again Excel मैं आप लोग को नहीं बता सकूंगी इतना short time में. You can go to video example. It is very very user friendly. You can find out क्या क्या classify, convert, edit, extract. Very beautiful commands है. इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है. Simply you have to choose that. Now GPT मैंने use किया. Now what I have to do? Prompt देना है मुझे. Prompt. So I want to find out the highest sales out of this total sales. Which one is the highest sale? So what I'll do, I'll in inverted comma, I will put the highest sale. ठीक है. Inverted close. This is my prompt. And from which cell I have to find out the total, the greater highest sale. So what I'll do, I'll choose the cells here. Again, let me tell you, if you have a very big data, it cannot do that. तो 2000, अगर आपका 2000 से ज्यादा ऊपर वो सब होगा, हो ही नहीं सकेगा कैलकुलेशन. फॉर दैट यू नीड अ पेड वर्जन. ठीक है. अब आई एम जस्ट क्लिकिंग इट. हाईएस्ट सेल्स मैंने कैलकुलेट करना है मुझे कि कौन सा हाईएस्ट सेल है. ओके. बिजी दिखा रहे. यस. सो 8. यस यस. यू वांट टू आस्क एनीथिंग?
So here, in this cell, G cell में, the highest sale is 82279. This is the highest sale. Okay. Now I just want a product name which is consistent throughout the means sale में सबसे consistently कौन सा बिक रहा है. So that is, let us see which one is the consistent. So I'm giving you again a prompt here. Okay. So any prompt if you want ki who is the highest purchaser, if you want that ki who has purchased the highest quantity. ठीक है, ये कर सकते हैं. Who has purchased the high. So you have to just write the English language. No formula driven it is. It is not required. Who has purchased the highest quantity. Okay. So here, this is the quantity. Simple. यहाँ पे. So here, if I go there, is person number 9. So person number 9, this is a person number 9 जो है, they have purchased the highest quantity, that is 85. 97 होना चाहिए ना. एक मिनट 9th नंबर में देख लेती हूँ. ठीक है. So this is how you can give a prompt in the Excel sheet itself and you'll get the highest quantity. Any prompt you want to give in Excel sheet, I can give for you and get the answer for you. Ma'am, in the first example, that 82,000, can it give the sale address? Sale purchaser address? No, sale address means in which sale this is. हाँ, उसमें आपको prompt देना पड़ेगा कि highlight the cell address, मतलब cell address भी आपको मतलब prompt जो है, you have to give the correct prompt what you want. So this is the GPT का prompt है जो आपको exact देना है. So this was, so I will quickly just go through all the अपना जो Microsoft का है, I will just quickly go through and then we can come back again and show this again कैसे ये हो रहा है. ठीक है, just मुझे एक-एक touch करना है सब. Yeah, sure. Let me just touch everything and then we can again take your question answers. ठीक है ना? So let us just go again to okay, PowerPoint में चलते हैं और से Word में जाते हैं. Word में भी you have an option to download GPT and accordingly you can give a prompt there. So अपना Word है क्या? एक मिनट. Let me just open one new Word file. It is opening one new Word file. We So can't see seeing the नहीं, Excel. मैं share करी नहीं है अभी तक, share की नहीं थी. Let me just share it. I had not shared that Word file. So it is मैं उसको upload करके छोड़ दी थी. Okay, let me just. So it is still processing. So I thought I will process it. So here in Word also you have. It's not getting connected. In the Word also you have this GPT for Excel Word. So you can definitely use this. There is some error here. No problem. We will go to PPT also. And so in every, you can see the Microsoft Office में there is an option nowadays, add-ins. Add-ins में जाके आप GPT use कर सकते हो. GPT for Excel, for Word, कुछ भी आपको यूज करना है, आप प्रॉम्प्ट उसमें देके कर दो. तो ग्रामरली चेक करना है, पैराफ्रेज करना है. इन वर्ड यू गेट दिस फैसिलिटी कि ग्रामरली चेक करना है, पैराफ्रेज करना है, ऑल दीज. और यू वांट टू नो द, सो दिस इज वेलकम टू चैट जीपीटी हियर. सी यू गॉट इट. तो उसने बोला कि नहीं कर ही देते ये चीज. सो हियर एनी से सपोजिंग एनी कोई कंटेंट्स है, you want to know the source कि कौन से source से आया है. So earlier what happens, plagiarism check was very difficult, but here through this chat GPT you can check the plagiarism check also. Everything can be done on that document itself only. Then and there only you can check. So this was for Word. Let us go madam, for we cannot see that Word file. हाँ, क्या बोल रहे हो? Word file नहीं दिख रहा आपको? Okay. मैं कर देती हूँ उसको Word file को भी. Okay. Madam, can you again show on the Word file how to download?
ओके I will just extract one, एक मिनट, मैं एक एक्सट्रैक्ट करती हूँ एंड पैराफ्रेज करते हैं अपने उसको, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन वन डॉक्यूमेंट। Madam, how to get that icon? GPT for Excel, Word, add-ins Word. में if you go na, if you go to add-ins, there is an option. Can you please show where is that add-ins button? हाँ मैं दिखा रही हूँ सर, वो कहाँ, एक मिनट, अगेन आई मिस्ड दैट, लेट मी जस्ट गो। वर्ड इज विजिबल क्या सर? वर्ड डॉक्यूमेंट इज विजिबल? No, ma'am. No. No. Okay. So we No. I think you have to share the screen. You may be share the- sharing window. Instead of Now it window, is visible, share the sir? screen. Now it is visible? No. Yes, अभी yes. भी- हाँ, अभी Yeah, भी- now visible. Okay, so you go to add-ins again, sir. So I've already added GPT for Excel. So here, let me show you थोड़ा चीज दिखाते हैं। Mendeley site, it is very important for the researchers nowadays. Mendeley site बहुत use हो रहा है. So whenever I say supposing want to write a research paper, lot of papers I refer, ठीक है? And it becomes कि मेरा जो storage capacity may be very small to store all the research papers जो मैंने किया. So what I can do, I can use Mendeley site. I have not downloaded yet. मुझे add करना पड़ेगा. Because I have changed the laptop recently. Earlier laptop में it was there. Mendeley site में जाती थी. I used to store all my research papers there which I had referred. And जब भी मुझे reference चाहिए होता था, I can easily go from यहाँ पे Mendeley ऊपर में आ जाएगा. And here I can click and find out which papers I had referred. ठीक है? Autopilot, all these can be used. Autopilot वो सब use करेंगे. If you want to rephrase anything, you want to check the plagiarism, you want to check the Grammarly, all these can be used through autopilot वो सब जो co-pilot आपको ऐप में मिलेगा, गूगल में जाएंगे तो co-pilot बोल के मिलेगा. So you can take the help in this manner. So this was for Word. Let us go for PowerPoint. PowerPoint, believe me, मैं बहुत use करती हूँ. So I think again I have to share ना. I have to share again. Yes. Okay. Now it is visible PowerPoint. ठीक है? It is visible ना? No, ma'am, it's Word. It is not visible PowerPoint? No. No, we can No, see no, only no, Word. no. Okay. Madam, first stop your screen share. It is visible now. ठीक है ना? Yeah. Yes, we can see. So say supposing I am going to this slide. ठीक है? Okay. Now what is happening? So एक मिनट, हाँ, मुझे इसको वापस बंद करके I have to go again to my stop हो जाता है ये बीच में लगता है इसको ये भी I'm just opening my chat GPT. I'll share the screen again. So it has started again. So what is happening? Say supposing this is the slide which I have already shown you. I am not liking this background. मुझे पसंद नहीं आ रहा ये background. Believe me, बहुत अच्छा ये option है. PPT में we struggle, smart art डाल रहे हैं, कहीं से copy किया content. I want to decorate it. Go to this designer. ठीक है? And this designer will give you so many options. You click on that. Not only for this, say supposing मुझे कोई और slide को change करना है, they will give automatically अपने आप इसमें आता जाएगा options. Any idea? See, you are getting अपने आप smart art बन के आ रहा है. You don't have to click and type करना वो सब कुछ नहीं. You just type the matter here and the designer will give you an option कि आप क्या क्या कर सकते हैं. इसमें भी add-ins है, बहुत सारे add-ins है. ठीक है? जो आपको data चाहिए था, someone asked me ना कि चैट जीपीटी इसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं. सो यू कैन यूज द चैट जीपीटी हियर आल्सो. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू से बार ग्राफ और एनी अदर प्रेजेंटेशन फॉर्म, यू कैन यूज गूगल में जाके कैनवा यूज कर सकते हैं आप. कैनवा इज अ वेरी गुड एआई असिस्टेंट, आई कैन से. लास्टली पीडीएफ का मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ पीडीएफ इज यूजिंग. ऑफ कोर्स दे आर आस्किंग, आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ you can say prompt in a PDF, but still I will show you ki how
AI can be used for PDF also. So my screen is visible. Yes. PDF we are not able to see. We are seeing PDF. PPT. Okay, PDF you are not able to see. I will just go to PDF. This is my PDF form. Okay, it's visible now. It's visible now. No, Yes. no, madam. Yes. PDF we can't PDF see. visible है. ये PDF है आपका जो ये facts का vision for high quality assurance of sustainability information. Yes, now we Excuse me, can see. ma'am, I have a question. You just let me complete this and I will take the question answers फिर इसके Okay, बाद. fine, fine. बस ये last Yeah. time PDF करवा देती हूँ. एक बार Yes, दिखा yes. देती हूँ कि कितना Yes. मुझे तो बहुत help किया था. Now what happens? This slide ये जो document जब मैंने download किया था, actually 2 दिन पहले की बात है. That is why I am sharing this with you all कि मतलब कैसे तो this every day the technology is changing and you can see that how it has changed. It was so clumsy and it was very difficult for me to focus here. क्या दिया हुआ emerging best practices, global standards सब एक साथ दे दिया. So what happens? Here AI assistant दिया हुआ. This is AI assistant. And you know what happens? This AI assistants, whatever, they will give you probable questions also. This document contains chart. Here are some suggestions you can try. Provide a list of the 5 most important points. If I click here, they will give you the 5 most important points which are there in this document. What is the recommended approach? So the questions also they will give you which you require to answer in order to decode this document, or in order to make it simpler this document. They will give you the probable questions also. Click on that questions, you will get the answers also from that document. This is all about PDF. Now the last thing, let me complete the slides also. इतना मेहनत करके slides बनाए हैं. So let me complete this slide. I'll take the question answers then after that. I'm so thankful to all of you. You were so interactive. आप believe करो मुझे मतलब मुझे दिखाने में मजा आ रहा था. तो I just can't recollect also कहाँ तक हम लोग किए थे. Okay, this was ChatGPT, use cases of generative AI. अभी सब कहानी है. थोड़ा कहानी खत्म कर लेते हैं इसको. जब स्टार्ट किया है तो होना चाहिए. So I have showed you कि how you can use ChatGPT in various forms in financial analysis. There are challenges, of course, ethical consideration. It may give wrong rules and regulation also. So you have to be very careful. Here the human intervention comes here कि आप जो पढ़ रहे हो, जो extract कर रहे हो ChatGPT से, you need to check the authentication. You need to check the plagiarism also, regulatory compliance. किसी ने पूछा था कि ये regulatory compliance right भी हो सकता है, wrong भी हो सकता है, but you have to check. You have to be very careful when you're using this. Future trends, a lot of predictive models have come. So by looking at a company nowadays, you don't require any person to predict. They will do the predictive analysis through different tools, and they will give you also statistical tool क्या-क्या use किया है. तो कोई भी data को जैसे मैंने वो 5 साल balance sheet I used. If I want to predict the future sales, future profitability, all these can be done through statistical tools, and they have this embedded there. Current state hai, it may, like for example, we have already discussed this, it can provide inaccurate and misleading information. Without knowing the source, please do not trust that. New kinds of plagiarism, like for example, अगर claim कर रहा है सुखविंदर कि मैंने गाना गाया but जबकि originally A.R. रहमान ने गाया है, तो people may not know also, they may not know the truth also. अभी कोई और का face किसी के साथ चिपका के बोल दिया कि she is the latest trending वो fashion चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, it become, so there are lots and lots of chances of generating fake news. You don't know, now you cannot identify or just find out the difference between the fake and the real. It becomes very difficult nowadays because of AI. ये बहुत हो रहा है. That is why they are putting restrictions on the AI usage, and that is why जो मैंने आपको दिखाया था Dell E और वो बाकी की जो साइट बताए थे उसमें restriction आ गया है. It has become a paid version. Earlier it was free. Limitation again very difficult. They cannot identify the source of content, sound or bias, prejudice, hatred, सब चीज वो देगा जो भी आपको चाहिए, they will give you.
the most important जो है, the you can say the thing, they are actually replacing the jobs. So earlier you needed a typist और means प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए कोई आपको बंदा चाहिए था जो लिखे, करे, एनालिसिस करे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए, लीगल डॉक्यूमेंट्स को समराइज करे. सो आई एम फ्रॉम दैट एरा कि व्हेन आई हैव फाइल्ड offline means returns with all the documents attached to. So I cleared my CA long back, 1998 में I cleared my CA. So तब वो सब eras हम लोगों ने देखा है. We have also seen the pandemic era जब assessing officer पे जाने की जरूरत नहीं, सब everything has become now online. काफी judgment वो सब हो सकता है. So this is all because of AI. It is replacing the jobs now. We need to be smarter than AI now. So your approach should be कि the AI should not engulf you. Rather, you should control the reins of your AI. So you need to be one step forward. For that, you need to keep yourself updated with the latest technology. Find out the lags. जैसे अभी विवेक जी ने वो सही बोला, अच्छा इसमें फीड नहीं होगा 23 का, लेकिन बाढ़ में फीड था. Okay, so if you are not competitive or you are not proactive, AI will actually means replace you, and there will be people, lot of unemployment and lot of businesses which will, so there will be no actually future opportunity only rather. So आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चन, तो पहले कॉल बॉयज यूज करते थे कि जो कॉल यूज करते थे, कोल्ड कॉलिंग करते थे. नाउ रोबोटिक्स दे आर डूइंग, ग्राफिक्स फॉर वेब पेजेस, एडवर्टीजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय AI नाउ. सो हार्मफुल इफेक्ट्स अगर देखेंगे तो डीप फेक्स, प्राइवेसी वायलेशन हो गया. प्लीज डू नॉट अपलोड योर यू कैन से जो आपका प्राइवेट या क्लाइंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, डू नॉट अपलोड, बिकॉज whenever someone will ask any queries, they may give that documents to that person. So confidential documents, please beware, do not do this. Of course we have noticed, उरी में मूवी में देखे थे कि drones can be used, अपने कहीं भी जाके वो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ड्रोन्स जैसे हम लोगों ने उड़ी में सीखा कि अच्छा चलो दुश्मन के वो वहां जाके उसने फोटो क्लिक करके भेजा, बट यूएसए एंड यूएसएसआर दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रीमियम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. दे आर यूजिंग, जो भी कोई भी इंश्योरेंस लेना होता है, सपोजिंग घर का इंश्योरेंस लेना होता है, द ड्रोन्स गो एंड क्लिक द प्रोबेबल रिस्क विच आर फेस्ड बाय दैट प्रॉपर्टी. एंड एक बार ऐसा ये लाइव, ये एक्चुअल हुआ था कि दैट हाउस वाज एक्चुअली इरेक्टेड ऑन द वॉल्केनोज, एंड ड्रोन से क्लिक किया, एंड दे केम टू नो कि भाई दैट हाउस इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल्केनो और कभी भी वो जूम होके बूम हो जाएगा. सो हियर drones can be used in different manners, which we are not aware also. So we need to know which app we are using and क्या क्या benefit उसका हो सकते हैं. And that's all from my side. I just hope कि ये हो गया. Excellent session, madam. Excellent session. I enjoyed it. Yeah. And thanks a lot, sir. मतलब तो बस आप Very, you so much. very useful or very interacting. We are looking World-class forward session, to ma'am. have more detailed sessions in this. of course, not a problem. So फिर तो अपने Excel में जाके कैसे चार्ट बना सकते हैं, and you don't require no. Thanks a lot. I'm so grateful to all of you. You all were so interactive. Believe me, मुझे जो भी एनर्जी आई है ना, बोलते हैं ना वो एक मूवी थी जिसमें धूप से एनर्जी आती है, तो मुझे आप लोग से एनर्जी आई, and because of that only I tried to cover lot of things in one session only, so that जो भी whatever I have learned from my means जितना भी कर रहे हैं उसके accordingly I just shared this with you all. Thanks a lot. Madam, you Actually, have not this kept needs any about knowledge with you. Everything you have shared. So very few lucky one, the confident people, they do that. You have not kept any secret with you. Thank So you, God sir. bless you, ma'am, Thank for you. being so much caring. Thank you, sir. Any Thanks, Amita. questions if you want, I can take the questions now.
So any questions? If you have, I can take the questions. How can we online Microsoft 365? Madam, I can't hear you. Can you please repeat your question again? How can we use Microsoft online? Acha, Microsoft Instead of online. online, yeah. See, whenever you are using AI, you need to use internet. Otherwise, जो भी Microsoft का Excel, all these you need to use the formulas, everything. But if you need to seek the help of ChatGPT या AI का assistant चाहिए, तो there should be internet. Otherwise, they will not be able to give the answer. No, there is one other version, online 365, Microsoft 365. So we can do everything online. हाँ, अब कर सकते हो, but why to go online? मतलब why to search Google में जाके? Why you need? If you want a specific word related queries, you add ChatGPT in Word, so that whenever you are typing, then and there only you are correcting, rephrasing, plagiarism check कर रहे हो, उसी समय कर रहे हैं. Otherwise, lot of time gets wasted. This is for those people, say supposing you are sitting before some client and you want to answer spontaneously, you want to answer. You can use your smartphone and do that. तुरंत का तुरंत. So any client has come, sir, आप बताइए IPO listing करना है, मुझे क्या-क्या documents I need to submit. Okay. So say supposing some people who are practicing for the first time, they may not know the detailed form. आप use कर लो, तुरंत ChatGPT या Bard use कर लो, and Bard में you have seen कि latest भी आपको मिलेगा. You will get the full list of documents. तुरंत आप क्वेश्चन पूछिए जनाब, हम आपको आंसर अभी तुरंत देंगे. We are from the smart era and smart answer अभी तुरंत देंगे. So that is the thing. That is why nowadays you don't have to delay. You can find out even what is the honorarium applicable for filing the return, covering capital gain, profits and gains, जितने भी है सब cover करके आपको जो exact rate होना चाहिए वो आपको करके देगा. Believe me, एक IPO listing recently मैंने MSME का कराया था, बहुत ज़्यादा help मुझे मिला था, because sometimes I cut, you may have to cut a sorry face, okay, आधा knowledge है, हम नहीं दे पा रहे. Please seek the help of all these apps and give your answers spontaneously. And of course, you will be the master of that event फिर वो होगा. हेलो. Yes, sir. हाँ भाई. रोहित जी बोलिए. Yes, ma'am. हाँ. Yes, बोलिए. अगर हम लोग if we want to in depth analysis of this, which will be the best option? तो सर अभी क्या है ना, मैं आपको बार्ड दिखा दी हूँ. को-पायलट जो है, रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा. Yes. है ना, बिकॉज यहाँ पे आप अपने थोड़ा वैसा कर रहे हैं, तो प्लीज इफ यू कैन जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, we can answer that also. So what happens if you will compare Copilot, Bard and ChatGPT? कि बहुत ही आजकल ऐसा हो रहा है कि रिकॉर्डिंग कुछ आ गया है एंड वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाएगा कि इस मैडम ने बोल दिया था कि इसकी बुराई कर दी थी, वो लोग मेरे पर केस और ठोक देंगे. तो वृंदा जी, आप अगर इफ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी.